Hello students, the question is water flows in a horizontal pipe whose one end is closed with the valve. The reading of the pressure gauge attached to the pipe is P1. The reading of the pressure gauge falls to P2 when the valve is opened. The speed of water flowing in the pipe is proportional to option 1 square root of P1 minus P2, option 2 P1 minus P2 whole square, option 3 P1 minus P2 whole power 4 and option 4 P1 minus P2. So, the problem is based on the topic fluid dynamics and in particular the Bernoulli's theorem. So, in this particular problem there is a pipe, there is a horizontal pipe. Horizontal means it is placed in a horizontal manner with respect to ground, and one of its end, this is end, it is closed. So, there is no outgoing fluid in this case. Suppose the height of the pipe is h. So, when the pipe is closed and when there is a gauge here which is measuring pressure, in this case the pressure is given as P1. So, from the Bernoulli's theorem we know that P plus half rho V square plus rho G H is equal to a constant, or we can write as P1 plus half rho V1 square plus rho G H1 is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2. Now, in this case, the when the pipe is opened, the liquid is coming out from the pipe, and suppose the velocity of the or the speed of the liquid is, in this case, is V2. In the second case, it is V2, and the pressure gauge is measuring the pressure of P2 here in this second condition. The height of the pipe does not change, it remains same as in the previous case. So, H1 and H2 both are equal to H here because of the same height. So, we can write it down as P1 plus half rho into V1 square. V1 is 0 in the first case because no outgoing fluid, so the speed is 0 here, and plus rho G H is equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H. Now, this rho G H term cancels from both sides as H is same in both the cases, and in the left hand side this second term also cancels because it is 0, and what remains is P1 is equal to P2 plus rho half rho V2 square, or we can say that P1 minus P2 is equal to half rho V2 square, or we can say that V2 square is equal to 2 times P1 minus P2 upon rho, or we can say that the speed V2 is equal to square root of 2 times P1 minus P2 upon rho. Now, from this particular equation you can easily see that this V2, the speed in the second case when the pipe is open, is directly proportional to square root of P1 minus P2. So, in this way we can say that option 1 is correct here. This is the correct answer here in this case. So, यहाँ पे एक प्रॉब्लम पूछी गई है, इसमें कहा गया है कि वाटर फ्लो कर रहा है एक हॉरिजॉन्टल पाइप में, उसका एक एंड क्लोज किया गया है वाल्व के थ्रू, यहाँ पे एक वाल्व लगा हुआ है जो कि इसको क्लोज कर देता है एक एंड को। उस समय जो प्रेशर गॉज रीडिंग देता है वो देता है P1। फिर उसके बाद जब वाल्व को ओपन कर दिया जाता है यहाँ से, तो लिक्विड कमिंग आउट होने लगता है, लिक्विड जो है वो फ्लो करने लगता है आउटवर्ड डायरेक्शन में, और प्रेशर गॉज जो है उसका जो प्रेशर रीडिंग है वो फॉल डाउन होके P2 रह जाता है। हमसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ वाटर क्या होगी पाइप की, और वो P1 और P2 के टर्म्स में किस मैनर में लिखी जाएगी। क्या वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ P1 माइनस P2, क्या वो प्रोपोर्शनल होगी P1 माइनस P2 होल स्क्वायर, क्या वो प्रोपोर्शनल है P1 माइनस P2 द होल पावर 4 या P1 माइनस P2 के। तो यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है इस प्रॉब्लम में। बर्नौलीज थ्योरम के अकॉर्डिंगली हम जानते हैं P प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे दो केसेस की बात हो रही है। पहले केस में वाल्व ने क्लोज कर रखा है पाइप को, सपोज हॉरिजॉन्टल पाइप h हाइट पे है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1, और सेकंड केस के लिए होगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2। यहाँ पे हाइट में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे दोनों तरफ से रो जी एच टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में V1 की जगह हम 0 पुट कर देंगे क्योंकि उस समय
पाइप जो है वो क्लोज पोजिशन में है और कोई भी लिक्विड जो है वो फ्लो नहीं कर रहा है, तो स्पीड जहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस तरह से दूसरा टर्म जो है वो भी 0 हो जाता है। तो इक्वेशन हमारी आती है P1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर, या हम कह सकते हैं V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स P1 माइनस P2 अपॉन रो। फिर उसके बाद स्क्वायर रूट दोनों तरफ लेंगे, जिससे रह जाएगा V2 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स P1 माइनस P2 अपॉन रो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, क्योंकि 2 और रो जो है दोनों कांस्टेंट है, डेंसिटी और 2 जो है दोनों कांस्टेंट है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्पीड होगी, जिस स्पीड से वाटर बाहर आ रहा है पाइप में, वो प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ P1 माइनस P2। इस तरह से ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। सो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।